I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 17, Conditionals. Okay, so let us start now this chapter, kids. चलिए, look at this sentences है हमारे सामने. Number first, if you heat water to 100 degree, it's white. Okay, चलिए. Number second है, if it snows, यदि बर्फ होती है तो we will make a snowman. तो हम एक snowman बना सकते हैं. Okay. What the sentence mentioned above are called conditional sentences. One of the clues in such sentences lay down the conditions for the action indicates in the second clause. Okay, chaliye. Conditional sentences usually contain two clauses. One that states a condition and is often known as the if clause, and the other that mentions the consequences. Okay, chaliye. Such sentences are called conditional sentences or simply conditionals. Usually, if clause is the dependent clause while the consequence clause is the main clause. Okay, chaliye. Definition है, a conditional sentence is one in which one of the clauses state the condition for the action indicated in the second clause to be performed. Okay, चलिए. Types of conditionals हैं factual or the real conditionals. We use factual or real conditionals to take about conditions that are real and can be fulfilled. These conditionals may also predict events provided a conditions is fulfilled. Okay, चलिए आगे है. Next पे unreal or the hypothetical conditions. Definition है, we use unreal or hypothetical conditions to track of conditions that are unreal or imaginary and hence can't be fulfilled. Okay. Next, for types of the conditional are used in English. Number first, zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Okay. Now, kids, discuss करते हैं हम zero conditionals. Zero conditional is used to describe general truth and scientific facts. Okay. It is used for general truth when a situation always occurs and when something is of standard factors. Okay. For zero conditional, we use the pattern. हमारे पास rules है if plus simple present और simple present के साथ. Example है, if the battery has no charge, the mobile does not work. Okay. दोनों सेंटेंस कैसे हैं, इसके बाद दोनों सेंटेंस हमें प्रेजेंट में ही बनाने होते हैं. ओके, चलिए आगे हैं. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है. द फर्स्ट कंडीशनल और द कंडीशनल टाइप इज आल्सो कॉल्ड प्रोबेबल कंडीशनल्स. इन द फर्स्ट कंडीशनल इफ क्लोज इज द प्रेजेंट टेंस, यदि हमारी पहली क्लोज प्रेजेंट टेंस में होती है, the sentence describes something that is likely to take place. So they are also called probably or likely conditionals. For the first conditional, we use the pattern. इसके साथ पहला सेंटेंस तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा और दूसरा हमारा फ्यूचर के साथ बनेगा. ओके, चलिए. इन द फर्स्ट कंडीशनल है, we can use of other models verb like जैसे shall, can or may instead of will to talk of possibility, permission or ability. Example है, if Nikhil takes the shortcut, he may overtake the bus. ये क्या हुई, possibility. उसके बाद if you try, you can play chess. ये हो गई ability. Okay. चलिए, we can also use the present continuous or the present perfect tense in the if clause to take off the present action or the future conditions.
एग्जाम्पल है इफ यू आर वेटिंग फॉर द कैब, ये तो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और सेकेंड सेंटेंस होता है हमारा इट विल बी हियर, सुनिए हो गया हमारा किसमें, फ्यूचर का। तो जब हमारे इफ के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर ऐड हो जाए तो वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट एक्शन होता है और ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। ओके, चलिए आगे है सेकेंड कंडीशनल और द कंडीशनल टाइप सेकेंड is also called improbable or the unlikely conditionals. Example है if I had enough money I would buy myself a BlackBerry. चलिए the sentence is of conditional type second. The if clause is in the simple past tense or the past continuous tense. If clause indicate unreal situation in the second conditionals, so we also call the unlikely or improbable conditions. The second conditionals is used for action that are unlikely to occur. चलिए in the improbable or the unlikely conditionals है we use the pattern. इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं प्लस वुड के साथ अदर सेंटेंस की। एग्जांपल है इफ आई वर टू गो ऑन अ हॉलीडे आई वुड गो टू लंदन। पहला सेंटेंस तो हमारा पास्ट में और दूसरा सेंटेंस हमारा मॉडल के साथ बनेगा। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशनल। दूसरा एग्जांपल है इफ शी वर टू विन द लकी ड्रॉ एंड शी वुड गेट अ न्यू कार। ओके, चलिए द मेन क्लूज है वी कैन यूज माइट। इसमें किस चीज का यूज होगा, माइट और कुड इंस्टेड ऑफ वुड की जगह। एग्जांपल है इफ शी हैड अ पीस ऑफ लैंड शी कुड बिल्ड अ न्यू हाउस देयर। यदि हमारा सेंटेंस परफेक्ट की बात करता है ना, हैड पास्ट परफेक्ट की, तो यहाँ पर मॉडल चेंज होकर क्या आएगी, कुड या फिर माइट। यदि हमारा प्रेजेंट की बात करते हैं सिंपल पास्ट की, तो क्या आएगा, हमारा वुड आएगा, है ना, मॉडल आएगा वुड। और यहाँ पर मॉडल अगर वुड आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है यदि हमारे पास कंडीशनल है इफ के साथ हैड का यूज हो रहा है ना, तो थर्ड कंडीशन में क्या है, मोर एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पर वुड कुछ भी आ सकता है। एग्जांपल इफ आई हैड इनफ टाइम आई वुड लव टू लर्न बेकिंग। उसी तरह इफ आई रीच्ड ऑफिस क्विकली I could attend the meeting from the beginning. Okay. Third conditional का examples है if you had stayed longer, you would have met him. If she had slept late, she would have missed her flight. Each of these sentences talk of the past action that did not take place. Each is an unreal or hypothetical condition. The sentences which describe a situation that did not happen and imagine the result of the situation are said to be the third conditionals. We use the third conditional to think about the past. We use the past perfect tense in the if clause and would have plus past participles of the verb in the main clause. We can also use the modal verbs है हमारे पास should, could और might instead of would to think of obligation, possibility or ability. Examples हैं if Rani had decided to go, she should have left earlier. ये हो गया obligation. उसी तरह if you had asked him, he could have helped, ये हो गई ability. चलिए remember in this sentences the conditional can't be fulfilled because the action is the if clause did not happen. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.